tracking through the material. So we can define here again some probability to find out the incident particles somewhere in the dx interval. So here, how much number of particles are reaching at the dx? Then we can represent here px. Px is the probability to find out the particles, and dx, this is the interval where we have to find out the how much number of particles passing through this target up to dx. Now, yesterday we also mentioned is the dA is the area where we collect the scattering particles by the detector. So that's why we present here dA and over A. A is that is the total area of the sphere. We can where we can collect from 0 to 2 pi. That means in phi. That means the r theta phi, that means the spherical coordinates where phi represents 0 to pi. So that's why in terms of next term, sigma t. Sigma t is the total scattering cross section where we can have one constant. We have one constant like one particle is incident on the one target. So that's why we include here sigma t. And then rho. Rho is the density of the material because we are including here only one segment dx, which is also the representation of the distance. So that's why we are using the for the whole because we are taking the uh, all dimension in the dimension unitless quantity. So that's why if you want to calculate the dimension of this term, then these terms are unitless quantity. Sigma t rho dx, because we are saying rho is the density and which is also in unit of per unit volume. So that means if we want to calculate the dimension of this term, then these are unitless quantity. So again, if you want to calculate how much number of particles diffracted or maybe scattered from the dx segment, then first we have to find out the how much number of particles coming from left to the dx segment. How much number of particles are coming to the dx? That means if nx number of incoming particles at a distance x from the edge of the target, and these are the number of particles which are reaching at the distance x, or we can say these are number of particles which are exactly reaching to the dx segment. Then how much number of particles are scattered from the dx segment, and which is represented by dnx. That means these are the scattered particles. S for the scattered particles, D for the some fraction of the particles, and nx is the number of incoming particles at the t distance. So now we can find out the how much number of particles are scattered from the dx segment. These are the like as dnfx, that means number of scattered particles from the dx segment, which is represented by dnfx, and exactly everything is going to the in the decrement, because if we are scattered 100 number of particles on a segment, then it is not necessary to scatter every and each particle from the segment. So that's why here we include minus sign here. Then minus dnx. This is the number of scattered particles from the dx segment, which is represented by this x. Now, nx is the number of particles which are incident, or we can say which are passing through the target up to the x distance,
to reach the DX segment, and the probability to reach up to the S segment. So again, here NX and then PX and DX. Exactly the mathematics say if we are reaching up to the DX segment, then how much number of our particles are passed through the target up to the X distance, and then how much probability to reach the particles up to the DX. So after that, we can say these are the number of scattered particles from the DX segment. And if it like as we can represent minus nx rho x rho, then we can find out or solve this term like this. Dnx over nx. This term we have to define here. Then minus the sigma t rho dx. So that's why we have here only this term because this is unit place quantity. And this is again some kind of measurements where we can do some measurements in terms of nx and some terms. So we can solve this equation by using the integral on both sides, left hand side and right hand side, and we can write the solution like that. Logarithm of nx and equal to minus the sigma t rho x. Only x का यहाँ पर integral होगा, then x plus t, and the conditions to find out the constant is at x equal to 0. The maximum number of particles are incident at the edge, at the left edge, are n naught. So that's why here we are using at x equal to 0 and x equal to n naught. So that's why c equal to ln at c equal to ln at naught, n naught, and you can put this c here, so we can find out ln x equal to ln naught minus the sigma t rho x, and then you can rearrange this equation again, and we can find ln nx over n naught equal to minus the sigma t rho x. So you can find out from here nx equal to n naught exponential minus the sigma t rho x. So that's why we can represent nx, number of scattered particles from the x dx segment, which is depends on the number of scattered particles incident on the left side, and this is the exponential term which we calculated from the possibility for the for the segment, for the dx segment. Now we can check if we are measuring the target from x equal to 0 to x equal to L, that means L is the thickness of the target, then we can find up to the right surface, how much number of particles are scattered. So we can represent x equal to L, then we can say and L. Here we can put x equal to L. So that's why we can represent here exponential minus the sigma t rho into x. This is the final number. We can calculate the number of scattered particles from the side segments. Now, number of scattered particles from a target of the thickness L. So basically, we have n naught number of particles at the left side space, and then nl number of scattered particles after the scattering at the right surface. So that's why we can calculate number of scattered particles from the target, or we can say from the whole target. Now this is the n naught minus nl we already calculated from here, then n naught exponential minus the sigma t rho l, and then you can common n naught term 1 minus the exponential minus the sigma t rho l. And one more thing, if sigma t rho l is the dimension
unitless quantity, then we can say sigma t is less than 1 in atomic scale. So that's why we can expand this term by the binomial expansion theorem, and we can find out the solution of in terms of sigma t, rho, and L. So here we can represent this term like this: N naught sigma t rho n, or we can say sigma t. We can calculate. That means the sigma t, we can find out how we can find out sigma t. That means NSL over N naught rho L. So that's why we can represent how much number of particles are scattered from the x equal to n. Then in the denominator n naught rho L. So that's why we can include here n naught is the number of particles at the left surface. Then rho is the density of the target material, and L is the thickness of the target. So here finally we can represent the solution, or we can say the number of scattered particles, or we can say how much number of particles are scattered from the whole target. So it is the again some dimensions are unitless here, but some dimensions are very small, or we can say from the incoming particle with respect to the incoming particle. Or we can say in terms of physical terms, dimension of the beam are very, very less than the target. So this is the some type of concept where we can include incoming and outgoing particles, how to calculate mathematically number of scattered particles from the from the any surface. Just one moment. Some people, am I audible? Yes, sir. Am I audible? No? Okay. Sir, you are Okay, now let's start with a very new number. So we are using the some numbers. We have N naught is the incoming particles per unit surface area. So that's why we are here representing some flux. And you also know some flux density, incoming flux density and outgoing flux density. So that's why here we are using J. J is the flux density, where we can use J equal to rho into V. Rho is the density and V is the velocity of the particle. So if the amplitude for the incoming particle is normalized to 1 per unit volume, then the flux coincides with the probability current density. So exactly the thing here, we find out some relations from these kind of equations. So these kind of equations are, you can see J equal to iota x bar over 2x, exactly the same as like you studied in the quantum mechanics, probability current density, how we can write. So exactly the thing. Now the important thing is transformation from C frame to the left frame. Yesterday we have a little bit introduction or exactly the same thing yesterday. But today we have, this is in your course in AQM. So we can start again here, and every unit and every notation should be in Jordan and drill notation. So here everything should be in Jordan and drill notation. You have to learn this thing
in a very particular way. Otherwise, you have to left something which are not used in BSc and MSc courses. So again, let us assume two particle collision where one before collision both particles are coming to the x-axis, and first particle m1, its mass is m1 and velocity is v1l. That means l is represent here laboratory frame. So yesterday we already tell about the what kind of laboratory frame and what kind of C frame. So exactly the same thing here. Yesterday we took here U1, but U1 is replaced by the V1M. And here M2, and U2 is replaced by V2L and equal to 0. That means M2 particle is again at rest. So now, after that, getting these particles are going this way. This is the M1 particle in the xy plane and the with the scattering angle theta L1. That means in laboratory from this M1 particle goes with the V1 L prime velocity at the angle at the scattering angle theta L1. Now the other particle M2 goes into x and minus the y plane, x and minus the y plane, and with the velocity v2l prime and the scattering angle theta L2. So this is the left frame. Now we can find these particles in the C frame also. So if you want to check, this is the C frame. Now this is the sequence. Where we can find the particles m1 and m2 with velocities v1c, and then m2 particle is with velocity v2c, and the center of mass along to the line of joining of these particles. And after the sketching, these particles are going in this way where we can represent the scattering angle and replace theta by theta c, because here we are using all the particles in the C frame, so this is related to the theta c. So exactly, uh, but here we are mentioning the Jordan and drill notation. So now, now we introduced the C frame here in this situation. So release mass should be mu equal to m1 on m1 m2 over m1 plus m2. Then VCM again m1 v1l plus m2 v2l. V2l equal to 0. So that's why here only one term m1 v over m1 plus m2. These are the two terms here for the introduction of the C frame. Now in C frame, before collision, we can find out the velocity for m1 and m2 particles. So here you can find out the V1C for the M1 particle in the C frame with respect to the center of mass. So you can put here VCM value from the above from the equation number 2, and then you can find out V1L equal to minus the M1 V1L over M1 plus M2. Then by solving this equation, you can find out M1, M2 is the common, and then some terms are cancelled out, then you can find out V1C equal to M2 V1L over M1 over M2. This is the equation number 3. Now, we can find out momentum for the first particle in the center of mass frame of space. And it is represented by P1C equal to M1 V1C. Here we calculated V1C, so you can multiply by this term, and then we can get the momentum for the first particle frame M1 M2 V1L over M1 plus M2. This is the one term. After that, we can calculate for the M2 particle exactly the same type solution we can get, and then V2C equal to minus M1 V1L over M1 plus M2, and represented by the equation number 4. Now again we want to calculate the momentum for the second particle M2, and which is represented by P2C, or
equal to M2 V2C equal to, then you can put V2C value from equation number 4, and then you can get minus M1 M2 V2, sorry, V1L over M1 plus M2. By the equations of, or by the calculation of the momentum uh, for the M1 particle and the M2 particle in the C frame, we can have an important result where we can see P1C, momentum of first particle equal to momentum of second particle, but opposite in direction. So we can represent here P1C equal to P minus the P2C. So these are the vector quantities. So that's why here we represent the particles like as towards each other. So hello. So here we can represent M1 and M2 particles. These are going towards each other. And now if we have some kind of assumption, मान लीजिए दोनों particles की जो masses है वो near about to same, then we can represent V1C equal to minus का V2C. So if we have some kind of constant M1 equal near about to M2, then we can represent V1C equal to minus का V2C. So this is the again main important result for our calculation. Now after collision, we can start with the velocity of the particles M1 and M2 for the M1 particle in C frame with respect to the center of mass. So here we can represent the velocity of M1 particle by V1C prime. This is in C frame. And then again V1L prime. This is the velocity of M1 particle after scattering in laboratory frame. And with respect to Cm, that means we can minus Vcm from here. So exactly the same here for M2 particle also, we can represent V2C prime, that means velocity of second particle or M2 particle in C frame. And it is representation with respect to center of mass. So again, we have equal to V2L prime, that is velocity of M2 particle in laboratory frame after scattering. With respect to Cm, that means minus WCm. So to find out the solution of these equations, because velocities are vector quantities, and you can see after the scattering, both particles are going in a plane. So that's why you can see the picture from here. Then we can calculate their x and y component. So in x component, where we can represent some laboratory some scattering angle theta L1 and theta L2, and in center of mass frame of reference theta C scattering angle. So if you are seeing the laboratory frame, but it is very important which particle you are seeing. If you are seeing the first particle, then you have to consider only the scattering angle theta L1. Or if you are seeing the second particle, that means then you have to consider only theta L2 scattering angle. This is the important. Otherwise, it is again some problem how to write the basic equations. So exactly, we have to write here component of the velocity along x-axis and y-axis. Then x-axis we can represent or we can say along the beam direction V1C prime. Then we can say V1C prime cos theta C equal to V1L prime cos theta L1, then minus the VCM. Here we consider only center of mass with respect along the x-axis. Here we can see
only, uh, sorry, here we can consider here center of mass along the x-axis. So that's why BCM is coming to the x component. Or if you are considering in x component, then the y component of the center of mass is 0. So you can rearrange this term V1 L prime cos theta L1 equal to V1 C prime cos theta C plus VCM. This is the equation number 7. Now, along the y-axis or the perpendicular to the beam of the direction, then we can represent V1C prime, sorry, V1L prime cos sin theta L1 or equal to V1C prime sin theta C. This is the equation number 8. So now we can calculate again some term like as tan theta or cos theta, like as yesterday term. So yesterday we have calculated tan theta. Now, sorry, tan theta 1. Now today we are calculating tan theta L1 for the M1 particle. So this is the scattering angle in terms of tangent. So equal to V1 C prime sin theta C or V1 C cos theta C plus VCM. That means we are dividing equation number 8 by the equation number 7. So that's why we have these kind of terms. Here you can common V1 C prime or then we can divide this term VCM by V1 C prime. Now this is some kind of again exactly the same thing VCM over V1. So it is again equal to as per the yesterday notation, or you can calculate by using the condition also. In system, the total momentum is zero before and after scattering. So we can say PC, that means PC is the total momentum before scattering. So that's why PC equal to M1 V1 C minus the M2 V2 C equal to 0. So now we can represent V2 C M1 over M2 V1 C. So we can calculate velocity of the second particle in C frame. Exactly the same thing we did here along the x-axis. We can represent PCX because this is again momentum. This is a momentum. So PCX M1 V1 C cos theta C with prime because after sketching we are did here. So after sketching you can say velocities are in a plane. So that's why you can represent here only x component or you can use here y component also if you want. So here I used here only x component. So PCX test equal to M1 V1 C prime cos theta C minus M2 V2 C prime cos theta C equal to 0. Now again you can calculate V2 C prime equal to M1 over M2 V1 C prime. This is the equation number 11. Now from the relation of kinetic energy, we can write some equations for the elastic stretching. Half m1 v1 c square plus half m2 v2 c square equal to half m1 v1 c prime square plus half m2 v2 c prime square. Here we can calculate v1c over v2c. So if you want to calculate v1c, then we can put here v2c from the equation number 10, and then in terms of v1c, then that means we can put here v2c prime in terms of v1c from equation number 11. So that's why you can put all the values from here, and now you can put all the values and then solving this. Then half m1 v1 c square plus half m2, then v2c from here, from equation number 10, m1 over m2 v1 c, then m1 over m2 v1 c, the whole square equal to half m1 c prime square plus half m2 m1 over m2 v1 c prime square. So that's why you can solve these equations like this. Here 1 m2 and here
m2 square. So here we have only m1 square over m2. So we can common here half m1 v1 square v1 c square. Then from the first term there is only one. Now half m2 से एक m2 कट गया था, यहाँ पर बचा ओनली m1 और यहाँ एक m1 कॉमन ले लिया, इसलिए m1 ओवर m2। जो नेक्स्ट टर्म है उनको आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से कॉमन लेके क्या है, 1/2 यहाँ पर फिर से m1 आ रहा है यहाँ पर और फिर v1c प्राइम स्क्वायर v1c प्राइम स्क्वायर। तो जो फर्स्ट टर्म आपकी ये पूरी कॉमन आ रही है इसलिए 1 आया है और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ से कॉमन आ रहा है उसके पास हाफ m1 v1 c प्राइम स्क्वायर। इसका मतलब है तो इसका मतलब है 1 प्लस m1 over m2। now you can calculate this term or this term, these are equal, and this term or this term, these are equal। तो ये इक्वल है तो ये कट गया है, तो बची आपके पास ओनली हाफ m1 v1 c स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 c प्राइम स्क्वायर। तो ये हाफ m1 क्रॉस आउट बाय द हाफ m1, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास v1c इक्वल टू v1c प्राइम राइट हैंड साइड से। So similarly you can get also v2c or v2c prime। This is the equation number 30। now we can calculate some other terms also। then v1c equal to v1c prime equal to v1l minus का vcm। so this term going to the with respect to the center of mass, so you can calculate v1c equal to v1c prime equal to v1l minus the vcm। that means velocity of m1 particle with in c frame after the scattering and it is equal to v1l minus the vcm। so you can calculate this term m2 v1l over m1 plus m2, exactly the same thing vcm over v1c prime। from here you can check this term vcm over v1c prime then vcm over v1c prime equal to, so you can calculate m1 v1l over m1 plus m2, then m1l plus m2 v1l equal to, तो जो m1 प्लस m2 ये क्रॉस आउट हो जाएगा, v1l से v1l भी क्रॉस आउट, ओनली एक टर्म बचेगी m1 बाय m2 इक्वल टू गामा। जो yesterday आपने जो टर्म ली थी exactly the same thing here, tan theta l1 equal to sin theta t over cos theta t plus gamma। This is the equation number 16। exactly you can calculate the same thing for the second particle also। so here for the second particle velocity of sorry v2c prime equal to v2l prime minus the vcm। v2c prime is the velocity of m2 particle in c frame after scattering। v2l prime is the velocity of second particle in laboratory frame after scattering। और BCM का यहाँ जो मीनिंग आ रहा है वो है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। So that's why here we can rearrange again like as the previous one v2l prime v2c prime plus vcm। now you can take the components along the beam direction and perpendicular to the beam direction। along the beam direction that means x के along लेना है और perpendicular to the beam direction that means y x के along। तो आप शुरुआत में आप चेक करेंगे तो v2l prime का मतलब है आपको देखना है लेफ्ट फ्रेम में, और लेफ्ट फ्रेम में सेकंड पार्टिकल के लिए जो स्केचिंग एंगल है वो थीटा एल2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर v2l प्राइम कोस थीटा एल2 लिखा इक्वल टू, फिर से हमने लिखा है यहाँ पर माइनस v2c प्राइम कोस थीटा सी। क्यों आया है ये आपको पता होना चाहिए, एक्स और माइनस वाई प्लेन में हम जहाँ जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ पर है जो सेकंड पार्टिकल है वो एक्स और माइनस वाई प्लेन में। सो दैट्स वाई हियर वी इंक्लूड v2c prime cos theta c plus vcm।
Now, V2L प्राइम sin थीटा L2, ये आपका जो y कंपोनेंट है उसको लिख सकते हैं, और फिर VCM को हमने अगेन ओनली, इसलिए आप इसको ओनली एक्स कंपोनेंट में रखें, वाई में इसका जो कंपोनेंट है वो जीरो रहेगा, और V2C प्राइम sin थीटा C. Now again you can calculate tan theta L2 equal to V2C prime sin theta C over VCM minus the V2C prime cos theta C. So again you have to common V2C prime from the upper side and the denominator side, and then you can calculate like this. So sin theta C so यहाँ पर again sin theta C over VCM over V2C prime minus the cos theta C. So exactly the same thing if you want to calculate the ratio of velocity of center of mass or velocity of second particle in sequence after stretching. Exactly the same thing, ratio of M1 and M2, which is denoted by gamma. Here we can represent here theta C over gamma minus the cos theta C. And more easy term, when M1 equal to M2, then we can represent gamma equal to 1. So again, it is very simple term for us. So now tan theta L2 equal to sin theta C over 1 minus the cos theta C. So this is the term where we can calculate other more things from here. So you can expand sin theta C by this equation. Then sin theta C equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. And 1 minus the cos theta C equal expand into sin square theta C by 2. So now there is one more term. So sin theta T cancel out, theta C cancel out by sin theta C. So there is only one term, cos theta C by 2 over sin theta C by 2. So we can represent here cos theta C by 2. So now this is the term cos theta C by 2. And we can represent the in terms of tan theta, because here in left side we have only tan theta. So you can represent tan theta tan pi by 2 minus the theta C by 2. Now tan theta L2, you can compare tan theta L2 in left hand side and right hand side, tan pi by 2 minus the theta C by 2. So we can write here theta L2, or we can see the scattering angle for the second particle in laboratory frame in terms of scattering angle in the field frame. तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का थीटा सी बाई 2. तो यहाँ पर जो टर्म आ रही है उनको आप चेक करें, पाई बाई 2 माइनस का थीटा सी बाई 2. तो ये जो इक्वेशन आ रही है, इसी इक्वेशन से आप टेन थीटा L1 भी निकाल सकते हैं. तो ये टेन थीटा L1 है इक्वल टू साइन थीटा सी ओवर 1 प्लस का कोस थीटा सी. तो हमारे पास पहले तो 1 माइनस कोस थीटा सी था, अब हमारे पास है यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा सी. तो ये जो कैलकुलेशन है वो आप गामा इक्वल टू 1 के लिए करना चाहिए. तो आप कोई वैसे ही कुछ टर्म, पहले 1 माइनस का कोस थीटा था, अब 1 प्लस का कोस थीटा. ठीक है. So that's why here 2 cos square theta c 2, or we can represent 2 tan theta c by 2. So now you have only one term, theta L1 equal to theta c by 2, and you can see here theta c by 2. So we can put, or we can replace this value from equation number 19 to 18. तो ये जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो थीटा L1 आएगा, और इस थीटा L1 को यहाँ इसमें रिप्लेस कर दिया. इसका मतलब है थीटा L1 प्लस का थीटा L2 इक्वल टू पाई बाई 2. जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द स्कैटरिंग हियर, these are पाई बाई 2 इन द लेबोरेटरी फ्रेम. या फिर ये कहें कि जो आफ्टर स्कैटरिंग है बोथ पार्टिकल्स
मैक्सिमम गोज इनटू द परपेंडिकुलर पोजीशन। ये हमारे पास एक सिचुएशन आई, इस सिचुएशन को हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही सिचुएशन यहाँ पर इनइलास्टिक स्कैटरिंग में करना है, तो ये गामा ये टर्म ऐसे आएगा। तो गामा इक्वल टू m1 m3 ओवर m2 m4 देन e ओवर e प्लस k की पावर हाफ। अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है देन यू कैन सी some measurements also. Q equal to 0 होता है because there is no energy production after that step. M1 equal to M3 होता है और M2 equal to M4 होता है। तो गामा equal to M1 by M2। Now we can start a new topic for you. So I think it will take some time, but I will try how we represent the differential scattering process in laboratory and field. So now we are going to find out the relation for the differential scattering cross section in the laboratory frame and the field frame. So mathematically both mathematically differential scattering cross sections are same in field frame and lab frame. So that's why here we can represent DST, which is represented by sigma function of theta and phi. And in laboratory frame, so we are representing here sigma L function of theta L and phi and d omega. Why we are using do? Because DST, differential scattering cross section, are confined in a sigma L, sorry, omega. Now, in C frame, because both are equal, so you can represent sigma C, theta C phi and d ohm C. Now, sigma L, theta L phi, that means जो d ohm L है इसको हमने rearrange कर लिया in the right hand side and we can put all the values of d ohm in laboratory frame and field frame. Only there should be some changes. Those changes are like that sin theta c, d theta c, d phi c, or sin theta l, d theta l, d phi l. So d ohm c, that means we are using the sketching angle of the C frame, or if we are representing here left frame, then we are using the sketching angle in the left frame. So if we want to calculate phi is limit, then everywhere phi should be same, because here is also the same limit in laboratory and in C frame. Phi equal phi is limit from 0 to 2 pi. So exactly the same. So that's why d phi is equal to d phi l होता है। तो ये क्रॉस आउट होगी टर्म, ओनली ये टर्म बचेगी sin थीटा सी d थीटा सी और sin थीटा l d थीटा l। तो वी कैन रिप्रेजेंट हियर sin थीटा सी d थीटा सी, और हम इस sin थीटा सी d थीटा सी को ऐसा लिख सकते हैं d ऑफ cos थीटा सी, यानी कि डिफरेंशिएशन है ये cos थीटा सी का। ऐसे ही हम नीचे वाली टर्म को भी लिख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ये है d cos थीटा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 21।
Now in simple formation, I can say something. So tan theta l, ये हमने पीछे वाली टर्म से निकाला था, tan theta l इक्वल टू sin theta c ओवर cos theta c प्लस टर्म, ये हमने एक टर्म निकाली थी पहले से ही। और अगर हमने ये टर्म निकाली, इसका मतलब हम लिख सकते हैं sin थीटा c और cos थीटा c प्लस गामा। इस टर्म को अगर आप चेक करेंगे तो ये sin थीटा किसके लिए होता है। अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, इस ट्राइंगल से आप कहाँ पर इसका हाइपोटेनस होगा, कहीं पर भी परपेंडिकुलर होगा, कहाँ इसका बेस होगा, वो आप खुद देख सकते हैं। तो अगर दिस इज द एंगल, दिस इज द थीटा एल1 एंगल, देन we can calculate sin theta c और cos theta c plus gamma. This is the base, जो डिनोमिनेटर में ये बेस है और ये sin theta है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है। So now we can calculate the hypotenuse. That is 1 plus gamma square plus 2x gamma cos theta. अगर sin square cos square आता तो वो 1 हो गया, इसका gamma square हो गया, ये 2x gamma cos theta c हो गया। So now finally we have to calculate cos theta c or cos theta l. So here we want to calculate cos theta l1 equal to cos theta l1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा l1। so tan theta l1 we have from here tan theta l1, so you can put here। आप खुद करके देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा एल1 करेंगे, इसका मतलब कोस थीटा सी प्लस गामा, तो कोस थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर होगा, उसका अंडर रूट होगा, तो ये ऊपर चला गया आपके पास। और जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो ये टर्म बची थी, उस टर्म को आप लिखिए 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2x गामा कोस थीटा सी, एक्जेक्टली द सेम थिंग है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। नाउ यहाँ देखिए ये क्या है, डी ऑफ कोस थीटा, डी ऑफ कोस थीटा है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा सी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू कोस थीटा है। तो हमें चाहे तो कोस थीटा एल का करे, तो यहाँ कोस थीटा एल का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कोस थीटा सी के रेस्पेक्ट। तो यही काम किया हमने, अगर कैलकुलेशन की है कोस थीटा एल वन की, तो हम यहाँ पर अब कोस थीटा एल1 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कोस थीटा सी, तो कोस थीटा सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हियर जैकोबियन। तो ये जैकोबियन जैसे ही आप निकालेंगे यहाँ, तो ये जैकोबियन निकालने का एक तरीका है, तो आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो डी कोस थीटा एल1 ओवर डी कोस थीटा। तो नाउ जो नीचे वाली टर्म है, तो ए बाई बी, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है ए बाई बी का, दैट मीन्स बी स्क्वायर। तो 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा कोस थीटा की अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये टर्म ऐसा जैसा ऊपर वाली जो टर्म है, उस टर्म को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2x गामा कोस थीटा सी, और कोस थीटा सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, इसलिए 1 माइनस कोस थीटा सी प्लस गामा, ये टर्म ऐसा जैसा। अब इस टर्म का करेंगे जो नीचे वाली टर्म है, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस गामा स्क्वायर, तो 1 का ये पावर हाफ है, इसका मतलब हाफ माइनस का 1 होता है, इसलिए माइनस का हाफ आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ चेक कर लीजिए, जो हाफ है ये टर्म, उस हाफ टर्म को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2x गामा कोस थीटा सी। तो यहाँ देखिए 1 का भी जीरो, गामा स्क्वायर का भी जीरो, ओनली कोस थीटा सी का यहाँ 1 होगा, इसलिए 2x गामा लिखा हमने। Now we can rearrange and we have to solve the question, not very difficult to solve. So that's why here we have only 1 plus gamma square twice gamma cos theta because half and 2. So that's why here 1. Now half from the upper side, 1 plus gamma square twice gamma cos theta, इस टर्म से यहाँ पर हाफ आया है, तो कैलकुलेट करेंगे तो हाफ और हाफ 1 होगा, तो ये 1 plus gamma square twice gamma cos theta। Okay, now cos theta c plus gamma, so ये cos theta c plus gamma, now this is multiplied by gamma, so here we multiply here gamma cos theta c plus gamma square। Now finally we have Jacobian d 1 over d cos of theta c,
1 plus gamma cos theta from the upper part, gamma square थी gamma cos theta, that means only gamma cos theta बचा है यहाँ पर, और ये 1 plus cos theta, 1 plus gamma square gamma cos theta, ये 1 और ये हाफ, इसका मतलब ये 3/2। ये जो इक्वेशन नंबर 23 आ रहा है वो ऐसे आता है। Similarly, you can get the other Jacobian also, because here we use here we have only cos theta n, तो cos theta c तो हमारे पास एक ही है, तो cos theta c m1 के लिए भी सेम है और m2 के लिए भी सेम है। नाउ cos theta l, तो cos theta l यानी कि l में दो स्कैटरिंग एंगल है हमारे पास, l1 और l2, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर पहले हमने एक जैकोबियन निकाला, अब इसके लिए दूसरा जैकोबियन निकाला, और वो दूसरा जैकोबियन ऐसे निकाला। सिमिलर बन गया डी बाई डी, सॉरी डी cos of theta L2 over d cos of theta C equal to -1 minus cos theta C over 1 plus gamma square multiplied twice cos theta twice gamma cos theta to the power 3/2। तो दिस इज फॉर यू, और ये आपको होम असाइनमेंट में करना है ये चीज। तो आई कैन स्टिक हियर समथिंग फॉर द होम असाइनमेंट फॉर यू, so I can write this is the home assignment for all of you. This is the home to एडिट नहीं करना है मेरे को, तो एडिट कर रहा है, तो होम असाइनमेंट फॉर ऑल। तो इस होम असाइनमेंट को आप खुद करें, ये कैसे आता है आप सीखेंगे इसी चीज को, इसको सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो नाउ इन टर्म्स ऑफ you can see this is the home assignment for you। तो ये होम असाइनमेंट है, इसको आपको करना है, आप खुद कीजिए कैसे करेंगे। ओके, इसको सीखने की कोशिश करें आप कैसे कर सकते हैं, और यू हैव टू सबमिट हियर बिफोर द टाइम, बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 21, अगेन हम 21 नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें फाइनली ये जैकोबियन की वैल्यू रखनी है। ये जैकोबियन है डी cos ऑफ थीटा सी ओवर डी cos थीटा है। जब यहाँ पर ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो जैकोबियन होते हैं वो मॉडुलस में होते हैं, मैग्नीट्यूड में होते हैं। जब मॉडुलस और मैग्नीट्यूड होता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 21 वी कैन रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने निकाला है cos थीटा L1 ओवर cos थीटा C, और यहाँ पर है cos theta C over cos theta L. So we can represent here in the inverse formation. So differential sketching cross section in left plane equal to sigma C function of theta C phi, then 1 plus gamma square twice gamma cos theta C to power 3/2 over 1 plus gamma cos theta C. This is the equation number 25. Now you can calculate tan theta L2 equal to sin theta C over gamma square cos theta C. Exactly the same thing जो हमने लास्ट टाइम अभी पीछे वाले पेज में किया है ना, तो लास्ट पेज में एग्जैक्टली द सेम थिंग वी डिड किया। ये जो जैकोबियन था उसका मैग्नीट्यूड है, ये आपको निकालना है। तो ये जो अभी इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बताते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको sigma L is the function of theta L1 phi. Now this is the differential sketching cross section in the C plane, then 1 plus gamma square twice gamma cos theta to the power 3/2 over 1 plus gamma cos theta। ठीक, if gamma equal to 1, ये कब आएगा जब m1 equal to m2 है, यानी कि both particles masses are same। So then one more condition from the last topic, थीटा L1 इक्वल टू थीटा C/2, यही कंडीशन था हमारे पास। तो यहाँ से हम थीटा C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसको हम थीटा C की वैल्यू को थीटा C इक्वल टू ट्वाइस थीटा L1 ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और ये वैल्यू जब हमने पुट कर ली, देन वी कैन से हियर सिग्मा L
थीटा L1 फाइव इक्वल टू सिग्मा टी थीटा सी फाइव। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1+1 गामा की जगह 1 रख दिया हमने, फिर से ये ट्वाइस, फिर ये कोस थीटा, तो जो थीटा आ रहा है हमारे यहाँ पर देखिए थीटा सी, इसकी जगह आएगा ट्वाइस कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा सी रख लीजिए, इसको आप 3/2, और नीचे भी आपके पास 1+कोस थीटा सी है, तो आप इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया हमने, और 1+कोस थीटा सी की पावर 3/2 ओवर 1+कोस थीटा सी। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो 2 और 2 की पावर 3/2 है, यानी कि 1+कोस थीटा सी को आप कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट इसको हटा दीजिए, आपके पास एक टर्म बच रही है, उस एक टर्म को हम 1+कोस थीटा सी को लिख सकते हैं कोस थीटा सी बाई 2। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर। तो हम जैसे ही हम इसको करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू, यानी कि इसकी पावर फिर से क्या होगी, एक हाफ बचेगी, तो हाफ बच रहा है, इसका मतलब स्क्वायर आया था हाफ, ओनली एक टर्म बचेगी आपके पास। यहाँ पर जो 4 आया है 4 की पावर 3/2, देन 2 फिर क्रॉस आउट हो जाएंगे, ये कोस थीटा 3/2। तो फाइनली वी हैव ए रिलेशन for differential stretching cross section in laboratory frame or the sheet frame। हमने शुरुआत में कहा था मैथमेटिकली बोथ आर सेम बिकॉज द यूनिट्स आर सेम in lab frame and sheet frame, but there are some kind of multiplication factors which are distinguish these differential stretching cross section like H। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो थीटा सी बाई 2 था वो हम वहाँ से पुट कर सकते हैं, ये है थीटा L1। जो लेबोरेटरी फ्रेम में जो डिफरेंशियल स्पेक्ट्रम क्रॉस सेक्शन है वो इस प्रकार से होता है कि जो सी फ्रेम में डिफरेंशियल स्पेक्ट्रम क्रॉस सेक्शन देन मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू कोस थीटा L1, दिस इज द टर्म, ये टर्म था। नाउ जो दूसरी टर्म है वो हम देखिए सिग्मा एल थीटा L2 एंड फाइव, ये दूसरे वाली टर्म है, उसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सिग्मा सी और ये थीटा सी और फाइव होगा, देन 4 साइन थीटा सी बाई 2। तो ये आपको कब कैलकुलेट करना है, जब यहाँ पर माइनस होंगे, ये माइनस है, इस टर्म में आप चेक कर लीजिए 1 माइनस का गामा कोस थीटा, तो गामा इक्वल टू 1 पुट करेंगे और ये होगा 1 माइनस का कोस थीटा, देन 1 माइनस का ट्वाइस कोस थीटा सी की पावर 3/2। और आपको ये फिर से एक होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, इस होम असाइनमेंट को आपको खुद भी करना है। ये होम असाइनमेंट फिर से है, ये होम असाइनमेंट फॉर ये सेकंड, तो ये कैसे आता है आप खुद चेक करेंगे। और ये जो पहले वाला था होम असाइनमेंट, ये वाला फॉर ये फर्स्ट, ये दोनों होम असाइनमेंट है, आपको करने हैं, आप इनको कीजिए। कैसे करेंगे, आप समझ के करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो जो आपको आगे वाली टर्म है वो कोई भी समझ नहीं आएगी। ये दोनों होम असाइनमेंट आप कीजिए, आपको समझ में आएगा। फिर अभी इसके साथ में जो थोड़ा सा पार्ट हो रहा है वो समझा देते हैं। अगर मान लीजिए आपने गामा इक्वल टू 1 पुट किया है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। जो थीटा L2 है वो π/2 माइनस का थीटा c/2 आएगा, तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा c/2 है वो भी फोर कोस थीटा c/2, इसलिए यहाँ पर कोस थीटा L2 है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो तो सेम रहेगा, ओनली थीटा L1 और थीटा L2। जब हम फंक्शन की बात करेंगे इन द लेबोरेटरी फ्रेम और द शीट फ्रेम, तो अगर मान लीजिए ये केस हो हमारे पास, केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए हमने कहा M2 इज ग्रेटर देन M1, then how can we say M1 or M2 less than 1, or we can say gamma is tends to 0 because M2 is greater than M1, so this term goes to the 0, so that's why here we can represent tan theta L1 equal to sin theta c over cos theta c। ये टर्म ऊपर से आप देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर। तो जो गामा की टर्म है, आप
यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो टेन थीटा एल वन था हमारे पास, टेन थीटा एल वन को आप चेक कर सकते हैं। मेरा साइन थीटा टी और कोस थीटा टी प्लस गामा, गामा टेंस टू जीरो है, इसलिए हमने इसको सीधा लिखा है ऐसे। और हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा टी और कोस थीटा टी इक्वल टू टेन थीटा टी, और ये थीटा एल वन इक्वल टू थीटा टी। नाउ जो या फिर जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन इन लैब लेबोरेटरी फ्रेम इक्वल डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन इन द सी फ्रेम। तो ये हमारे पास ये टर्म है, इस टर्म को आपको लिखना है, कर सकते हैं हम। नाउ लेट्स सेट इफ m1 equal to m2, or we can say m1 divided by m2 equal to 1 equal to 1. Now we can represent theta l1 equal to theta c by 2 and theta l2 equal to pi by 2 minus theta c by 2। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे से। तो ये हमने जो फैक्टर निकाला है वही फैक्टर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक और थीटा सी बाई टू रहेगा, या फिर थीटा एल वन। और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था सेम वही कैलकुलेशन। थीटा जो सी बाई टू है उसको हम थीटा एल वन रख सकते हैं। फाइनली वी कैन सी थीटा एल वन प्लस थीटा एल टू बाई बाई टू, दैट मींस इन लेबोरेटरी फ्रेम both particles are scattered at 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जो 90 डिग्री टू ईच अदर वाला जो सिस्टम है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आज सेकंड टाइम भी समझाया है। लेकिन जो हमने होम असाइनमेंट दिया है आपको, आप उस होम असाइनमेंट को कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से नया सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग इक्वेशन है, इस स्कैटरिंग इक्वेशन को राइट डाउन करना होता है सबसे पहले। तो हाउ टू राइट डाउन द स्कैटरिंग इक्वेशन, देन हाउ टू द कपल्ड और हाउ टू द अनकपल्ड, ये चीजें हमें देखनी है। तो टुडे आई गो टू होम